we are halfway through elections, or well, half of India has voted, even though only 2 phases have happened, and we are going into the 3rd phase. By the time we air this, it'll probably be towards the 4th phase. But anyway, everybody's mind is, अच्छा चलो ठीक है, मोदी जल्लाद, मोदी खराब, मोदी सब कुछ खराब, ये बीजेपी से खराब चीज है ही नहीं इस दुनिया में. ठीक है, ऑप्शन क्या है? आप ऑप्शन किसको बनाएंगे? The funniest part is, ना सीधा बताओ. सीधा ही बताओ. The funniest part is, people would like to create this as a contest between Modi and Rahul because it makes Modi look better. अच्छा, don't have Rahul ना, then who Mamta? तो क्यों आपका मतलब मन सीधा राहुल पे क्यों जाता है? मैं पूछना largest single party after BJP, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. 2004 में. नहीं, मेरे को नाम दो. बता रहा हूँ. First who? I'm coming there. It's Modi or who? So Modi or कौन? Modi or who? It's Modi or Constitution of India. Simple. It is the Constitution of India that has out there. Absolutely. You'll rule by the book. Let me complete. Everybody rules by the book. You take oath. बिल्कुल नहीं. Sorry to disagree with you on this. No. This man wants his own constitution. This man wants to run this country by weaponizing institutions. That's a different story. Anyway, let me complete my point. 2004 में, when India was shining, apparently, everybody said the same thing. If not Vajpayee, who? कौन चला पाएगा इस देश को? जब लोगों ने तय किया कि किसी और को लाना है, इनको छोड़ना है, बाहर निकाल फेंकना है, तो निकाल फेंकेंगे. मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात पे आप इंडियन इंटेलेक्ट को इतना इंसल्ट मत करो, इतना अंडर एस्टिमेट मत करो कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी भगवान है, मोदी जी बता रहे हैं इंडिया को, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने आपकी ज़िंदगी बचा ली वैक्सीन दे के. ये बकवास जो चलता है हिंदुस्तान में, मैं इसको बकवास मानता हूँ, क्योंकि इस आदमी को जो एक काम नहीं कर पाया ठीक से, इसको भगवान दिखा के, इफ़ नॉट मोदी हूँ, क्यों नहीं? There are so many talented. You want to think about 2004, no, right? 2014 से पहले मोदी कौन था? नहीं, 2004 is what you are bringing forward. That 2004 it was, if not Vajpayee, who? You're drawing parallels. If not Vajpayee, who? And the country said we prefer the who rather than Vajpayee ji. So they said who. तो who का अब 2004 and 2024 में 20 साल गुजर चुके हैं. Do you think that Indians are ready to play that gamble again? What gamble? It's a gamble, no? Why not? They elected the same government again in 2009. Why is it a gamble if democracy has elected the same government again? In 2004, nobody knew who the Prime Minister is going to be. Which is fine. That's parliamentary democracy. That's how it came. Smita, we are not in a presidential democracy. Okay. We are in a parliamentary democracy. We elect our MPs. But MPs, what I'm saying is India has changed, hasn't it? Sorry. India has changed, but Indian mindset now is being thought policed. Okay. कि मोदी presidential format है क्या? मोदी को वोट देना है सीधा? नहीं Seems like that, no? No, it doesn't. It seems like that to you. It doesn't seem like that to me. When people are going around, when journalists are going around and speaking to people, not many are saying that हम महंगाई पे वोट दे रहे हैं या इस पे वोट दे रहे हैं. इट इज़ लाइक महंगाई को हटाएगा कौन या फिर रोजगार देगा कौन. उसके लिए या तो दे विल वोट फॉर समाजवादी पार्टी और दे विल वोट फॉर डीएमके और दे वोट फॉर मोदी. दे आर वोटिंग फॉर पीपल. वेदर यू लाइक इट और नॉट, पीपल आर नॉट, दे आर सीइंग ऑप्शन कि ये डिलीवरेंस किससे होगा. मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई एक आदमी को लेके इलेक्शन चल रहा है, अगर लगता है कि मोदी नहीं तो कौन या मोदी ही वापस आएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी ड्रिवन टू ईदर डिसलॉज वन पर्सन और इट शुड नॉट ऑल्सो बी ड्रिवन टू बेसिकली मेक श्योर दैट वन पर्सन रिटर्न्स. इट शुड बी ड्रिवन ऑन पॉलिसीज, it should be driven on the performance of the government, it should be driven on the agendas that are being set by various parties. So having said that, India is still, last time I checked, it's a parliamentary democracy. 543 लोकसभा सीट है, जिनमें अगर 272 जो पार करता है उनकी गवर्नमेंट बनेगी. तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि तेलंगाना में जो 17 सीट है, अगर इनमें हमने 10-12 निकाल ली, अगर 10-12 निकाल ली या ज़्यादा निकाल ली, तो कल कुछ भी हो सकता है. सो वाई वरी टू मच अबाउट मोदी जी नहीं तो कौन या ये नहीं तो कौन. बीजेपी वैसे अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, are they relevant in every single state in India? No. There are a lot of states where BJP is non-factor, non-entity. So what I'm trying to tell you is, in fact, this whole myth that is being propagated कि 400 जीतेंगे, contest करिए बीजेपी कितने? 420? तो मैं क्या कह रहा हूँ, this propaganda, this myth, this hype, this exaggerated hyperbole that gets created कि 400 जीतेंगे, 350 जीतेंगे, उनमें क्या वास्तवता है? Quite a few of them are realizing that was probably that backfired on them. That's what some are thinking within the party. And let me also say one thing. It shows the desperation of a leader कि 10 साल हुकूमत चलाने के बाद, सरकार चलाने के बाद, एक प्राइम मिनिस्टर अगर if he has to indulge in primordial rhetoric, it shows that the man is desperate and that he is losing. If he has to indulge in rhetoric to polarize votes on religious lines, if he has to talk about Aurangzeb, if he has to invoke Mangal Sutra, if he has to invoke primordial issues like Muslims having more children, that means the man is desperate and he's losing. He's on a sticky wicket. So it shows that India is definitely not what Modi ji was hoping for.